ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु शिवतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं तं सजीवं साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पदां सायं ललिता शिवशक्तं च ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिपासदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपेकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभात जय। प्रभु जी एक बार रिकॉर्डिंग आप होल्ड करेंगे? ठीक है, ईशु प्रभु स्टार्ट करिए आप ही। Soul research. Srila Prabhupada writes a letter, noted cardiologist Dr. Winford G. Bigelow. The central question you say is where is the soul and where does it come from? That is not difficult to understand. In 1968, speaking before a gathering of students at Manchester Institute of Technology, Srila Prabhupada points out an important lag in technological research. Although you have so many departments of knowledge, he says, there is no department aiming to find the difference between a living body and a dead body. Hare Krishna. Swati Mataji. Although advanced in understanding the mechanical workings of the physical body, modern science gives but little attention to studying the spiritual spark that animates the body. In the Montreal Gazette article reproduced below, we find world famous cardiologist Wilfred G. Bigelow urging systematic research to determine what the soul is and where it comes from. Reproduced next is Srila Prabhupada's letter in response to Dr. Bigelow's plea. Srila Prabhupada offers substantial Vedic knowledge on the science of the soul and suggests a practical method for scientifically understanding the spiritual spark. Get that headline. Heart surgeon wants to know what a soul is. Windsor. A world famous Canadian heart surgeon says he believes the body has a soul which departs at death, and theologians ought to try to find out more about it. Okay. Yes. Dr. Wilfred G. Bigelow, head of the cardiovascular surgery unit at Toronto General Hospital, said that as a person who believes there is a soul, he thought the time had come to take the mystery out of this and find out what it is. Bigelow was a member of a panel which appeared before the Essex County Medical Legal Society to discuss problems associated with attempts to define the exact moment of death. Continue करूं क्या प्रभु उसका? हाँ, ये आप पूरा कवर कर लीजिए, बहुत छोटी लाइन है. The question has become vital in the age of transplant. The question has become vital in the age of transplant of heart and other organs in cases where the donor are inevitably dying. The Canadian Medical Association has produced a widely accepted definition of death as a moment when the patient is in coma, responds to no stimulus of any kind, and brain waves recorded on a machine are flat. The other member of the panel were Mr. Justice Edson L. Haynes of the Ottawa Supreme Court and Justice Francis Leddy, the president of University of Windsor. Bigelow, elaborating on points he had raised during the discussion, said in an interview later that his 32 years as a surgeon had left him no doubts that there is a soul. There are certain cases where you happen to be present at the moment
when people pass from a living state to death, and some mysterious changes take place. One of the most noticeable is the sudden lack of life or luster to the eyes. They became opaque and literally lifeless. It is difficult to document what you observe. In fact, I don't think it can be documented very well. Bigelow, who become world renowned for his pioneering work in the deep freeze surgical technique known as hypothermia, and for his valve for his heart valve surgery, said soul research should be undertaken by theology and allied disciplines within the university. During this discussion, Lady said, if there is a soul, you are not going to see it. You are not going to find it. If there is a principle of vitality or life, what it is. The problem was that soul doesn't exist anywhere specifically, geographically. It's everywhere, and yet it's nowhere in the body. It would be nice to start experimenting, but I don't know how you are going to get any of these things, Lady said. He said the discussion reminded him of the Soviet cosmonaut who returned from space to report that there is no God because he didn't see him up there. Maybe so said Bigelow, but in the modern medicine, when something was encountered that could not be explained, the watchword is discovered. The watchword is discover the answer. Take it into the laboratory. Take it somewhere where you can discuss where you can discover the truth. The central question, said Bigelow, was where is the soul and where does it come from? Oh, Hare Krishna. yes. Swati Mataji. The Srila Prabhupada gives the Vedic evidence. My dear Mr. Bigelow, please accept my greetings. Recently, I have read an article in the Gazette by Ray Correle entitled "Heart Surgeon Wants to Know What a Soul Is," and it was very interesting. Your comments show great insight, and so I thought to write you on this matter. Perhaps you may know that I am the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. I have several temples in Canada, Montreal, Toronto, Vancouver, and Hamilton. This Krishna consciousness movement is specifically meant to teach every soul his original spiritual position. Naveen Prabhuji. अभी थोड़ा लिसनिंग मोड में रहूंगा. Okay, Prabhuji. Undoubtedly, the soul is present in the heart of the living entity, and it is the source of all the energies for maintaining the body. The energy of the soul is spread all over the body, and this is known as consciousness. Since this consciousness spread the energy of the soul all over the body, one can feel pains and pleasures in any part of the body. The soul is individual and is transmigrating from one body to another, just as person times transmigrate from babyhood to childhood, from childhood to boyhood, from boyhood to youth, and then to advanced old age. Then the change called death takes place when we change to a new body, just as we change our old dress to a new dress. This is called transmigration of the soul. Yes, Ishuru. When a soul wants to enjoy this material world, forgetting his real home in the spiritual world, he takes this life of hard struggle for existence. This unnatural life of repeated birth, death, disease, and old age can be stopped when his consciousness is dovetailed with the supreme consciousness of God. That is the basic principle of Krishna moment. As far as heart transplant is concerned, there is no question of success unless the soul is there in the heart. So the presence of the soul has to be accepted. In sexual intercourse, if there is no soul, there is no conception, no pregnancy. Contraception deteriorates the womb so that it no longer is a good place for the soul. That is against the order of God. By the order of God, a soul is sent to a particular womb, but by this contraceptive, he is denied that womb and has to be placed in another. That is scroll करेंगे उदित प्रभु. Anji. That is disobedience to the Supreme.
For Okay. example, take a man who is supposed to live in a particular apartment. If the situation there is so disturbed that he cannot enter the apartment, then he is put at a great disadvantage. That is illegal interference and is punishable. Okay. The undertaking of soul research will certainly mark the advancement of science, but advancement of science will not be able to find the soul. The soul's presence can simply be accepted on circumstantial understanding. You will find in the Vedic literature that the dimension of the soul is 1/1000th the size of a point. The material scientists cannot measure the length and breadth of a point. Therefore, it is not possible for the material scientists to capture the soul. You can simply accept the soul's existence by taking it from authority. What the greatest scientists are finding, we have explained long ago. Yes. Is there such many projects? Krishna, as long as one understands the existence of the soul, he can immediately understand the existence of God. The difference between God and the soul is that God is a very great soul, and the living entity is a very small soul. But qualitatively, they are equal. Therefore, God is all pervading, and living entity is localized. But the nature and quality are the same. Yes. Issue proof. The central question you say is where is the soul, where does it come from? That is not difficult to understand. We have already discussed that the soul is residing in the heart of the living entity, and that it takes shelter in other body after death. Originally, the souls come from God, just as sparks come from fire, and when the spark fall down, it appears to be extinguished. The spark of a soul originally comes from the spiritual world to the material world. In the material world, he falls down into three different conditions, which are called the modes of nature. When a spark of fire falls on a dry grass, the fairy quality continues. When the spark falls on the ground, it cannot display its fairy manifestation unless the ground is favorably situated. And when the spark falls on the water, it becomes extinguished. As such, we find three kinds of living condition. One living entity is completely forgetful of his spiritual nature. Other is almost forgetful but still has an instinct of spiritual nature. And other is completely in search of spiritual perfection. There is a bona fide method for the attainment of spiritual perfection by the spiritual spark of soul. And if he is properly guided, then he is very easily sent back home, back to Godhead, where from he originally fell. It will be a great contribution to human society if this authorized information from the Vedic literature is presented to the modern world on the basis of modern scientific understanding. The fact is already there, it simply has to be presented for modern understanding. Yours sincerely, A.C. Bhaktivedanta Swami. Okay. So moving to the next chapter, choosing a spiritual master. What is a guru? In all the Shastras, scriptures, the guru is described to be as good as God, but the guru never says, "I am God." The disciple's duty is to offer respect to the guru just as he offers respect to the God. But the guru never thinks, "My disciples are offering me the same respect they offer to the God, therefore I have become God." As soon as he thinks like this, he becomes a dog. Om Agyanam Timirandasya Jnana Janashalakya Chakshurannalmittamena Tasmai Shri Guruve Namah. I was born in the darkest ignorance, and my Guru, my spiritual master, opened my eyes with a torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Yes, his grace. The word Agyan means ignorance or darkness. If all the lights in this room immediately went out, we will not be able to tell where we or others are sitting. Everything would become confused. Similarly, we are in darkness in this material world, which is the world of tamas. Tamas or timira means darkness. This material world is dark and therefore it needs sunlight or moonlight for illumination. However, there is another word, a spiritual word, that is beyond this darkness. That word is described by Shri Krishna in Bhagavad Gita. Na tad basyate suryo, na shanshaka na pavakaha, yad gatva na nirvatante,
tadham paramam mama. That abode of mine is not illumined by the sun or moon, nor by the electricity. One who reaches it never returns to this material world. Yes, Prabhu. Business is to bring his disciple from darkness to light. At present, everyone is suffering due to ignorance. Just as one contacts a disease out of ignorance, if one does not know hygienic principle, he will not know what will contaminate him. Therefore, due to ignorance, there is infection and we suffer from disease. A criminal may say, I did not know the law, but he will not be excused if he commit a crime. Ignorance is no excuse. Similarly, a child not knowing the fire will burn will touch the fire. The fire does not think that this is a child and he does not know I will burn. No, there is no excuse. There are also stringent law of nature, and these law will act despite our ignorance of them. If we do something wrong out of ignorance, we must suffer. This is the law. Whether the law is a state law or a law of nature, we risk suffering if we break it. The Guru's business is to see that no human being suffers in this material world. No one can claim that he is not suffering. That is not possible. In this material world, there are three kinds of suffering: adhyatmic, adi bhautika, and adi devika. These are miseries arising from the material body and mind, from other living entities, and from the. एक minute. स्क्रीन पे अच्छा and from the forces of nature. We may suffer. दैविक है ना, मतलब ये दैविक मतलब जो देवी देवताओं के माध्यम से आती है मिजरी, तो वो तो हो गई आदि दैविक। आदि भौतिक मतलब जो दूसरे भौतिक जीवों से आ जाए वो आदि भौतिक, और आध्यात्मिक मतलब जो अपनी बॉडी से आ जाए। ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। करेक्ट है ना? तो आदि दैविक मतलब जो देवी देवता से जैसे हाँ, बाढ़ आ गई या ऐसा बाढ़ कुछ। आ गई, हाँ बाढ़ आ गई, या जैसे भूकंप आ गया, या जैसे और नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं। इनफैक्ट किसी भी तरह से जो बेसिकली जो एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड वो बोल सकते हैं। हम लोग अगर बोलेंगे तो एक्ट ऑफ डेमी गॉड बोलेंगे। अगर इमीडिएट कॉज की बात करेंगे तो क्लियर है ना स्वाति? और आदि भौतिक में मतलब जो दूसरे जीव आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे कोरोना, फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज। कोरोना कह सकते हैं आदि भौतिक। कोरोना, हाँ कोरोना नहीं, कोरोना तो उसमें आएगा आदि दैविक में। नहीं प्रभु, आदि भौतिक में आएगा ना, आदि भौतिक में आएगा। वायरस है ना, तो दूसरे भौतिक एंटिटीज हैं जैसे, तो उसमें जो कष्ट आएगा तो वो आदि भौतिक में आ जाएगा। तो कोरोना बोल सकते हैं कि वो आदि भौतिक है। अभी जैसे यहाँ पे आग वाग लग जाती है जैसे जंगलों में ऑटोमेटिक, वो सब आदि दैविक में आ जाएगा, है ना। आध्यात्मिक में आ जाएगा जो अपने शरीर और माइंड से हो रहा है, बीमारी वगैरह लग जाना, वो सब डिप्रेशन, या जो मेंटल स्ट्रेस हो जाता है जैसे, वो सब। क्लियर है ना? आदि भौतिक मतलब वो भी हो सकता है ना, जैसे फैमिली में ही सपोज वही चाइल्ड कोई अपने मतलब बड़ा होने के बाद पेरेंट्स को परेशान करे या वैसा कुछ। आदि भौतिक है वो। और सरल है, आसान है माता जी, हस्बैंड को याद कर लीजिए। सॉरी जोक कर रहा हूँ। तभी हमेशा याद रहेगा। आदि भौतिक है वो भी। यस, These तो are मतलब ये miseries. बताया गया कि ये तीन मिजरी ना कॉमन है, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सफरिंग से बचा हुआ हूँ, इसलिए ये बात आई है यहाँ पे। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, कोई बोले नहीं मेरे को तो कोई कष्ट नहीं है ना। तो अभी कोरोना से तो सभी अफेक्टेड हो गए, तो ये तीन मिजरी में वो सबकी लाइफ आएगी, ऐसा हो पॉसिबल नहीं है कि नहीं आए। यस प्लीज।
These are miseries as arising from the material body and mind, and from other living entities and from the forces of nature. We may suffer mental anguish, and we may suffer from other living entities, from ants or mosquitoes or flies, or we may suffer due to some superior power. There may be no rain, or there may be flood. There may be excessive heat or excessive cold. So many types of suffering are imposed by nature. Thus, there are three types of miseries within the material world, and everyone is suffering from one, two, or three of them. No one can say that he is completely free from suffering. ये पॉइंट है, इसलिए बताया गया कि तीन तरह की सफरिंग है, जो प्रभुपाद लास्ट में बोले ना, नो वन कैन से दैट ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सफरिंग। इसको बताने के लिए पहले 3 पॉइंट बताए गए हैं। इसीलिए जो भागवत में आता है कि इन तीनों सफरिंग से बचने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ को पकड़ना चाहिए और मटेरियल अपनी एंगेजमेंट कम रखनी चाहिए। ओके, we may then ask why the living entity is suffering. The answer is out of ignorance. He does not think I am committing mistakes and I am leading a sinful life. That is why I am suffering. Therefore, the Guru's first business is to rescue his disciple from this ignorance. We send our children to school to save them from suffering. If our children do not receive an education, we fear that they will suffer in the future. The Guru sees that suffering is due to ignorance. What is this compared to darkness? How one can in darkness be saved? By light. The Guru takes the torchlight of the knowledge and presents it before the living entity enveloped in darkness. That knowledge relieves him from the suffering of the darkness of ignorance. अच्छा, ये कितना अच्छा पॉइंट है हम सब गृहस्थों के लिए। इसमें लिखा है कि वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल टू सेव देम फ्रॉम सफरिंग। इफ आवर चिल्ड्रन डू नॉट रिसीव एन एजुकेशन, वी फियर दैट दे विल सफर इन फ्यूचर। तो अगर देखें तो बड़ा बड़ा क्राइम भी जो हो रहा है या जो लोग सफर कर रहे हैं उनसे मिलो तो वो एजुकेटेड है बहुत, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड नहीं है। तो यानी कि वो जो प्रिंसिपल है हम सोचते हैं कि एजुकेशन दे दो कि वो सफर ना करें, वो गलत है। करेक्ट ना? वो रीजन गलत है, एजुकेशन गलत नहीं है। बट अगर हम उस रीजन से देख कि अरे यार इसको ना हम तो जरा IAS PCS वगैरह बन जाए तो अपनी टेंशन खत्म हो, ये बेचारा लाइफ में सेट हो जाए, तो कौन हो रहा है लाइफ में सेट यहाँ पे? करेक्ट है। तो पॉइंट यहाँ पे अच्छा लगा मुझे, सोचा मैं हाईलाइट करा। यस प्लीज प्रोसीड। Yes, Prabhuji. मेरा ही अच्छा। One may ask whether the Guru is absolutely necessary. The Vedas inform us that he is tad vijnanartham sagurum ivabhigachet samitpani shrutriyam brahmanishtham. Mukund Upanishad 1-12. The Vedas enjoin us to seek out a Guru. Actually, they say to seek out the Guru, not just a Guru. Seek out the Guru, not just a Guru. The Guru is one because he comes in disciplic succession. What Vyasadeva and Krishna taught 5,000 years ago is also being taught now. There is no difference between the two instructions. Although hundreds and thousands of acharyas have come and gone, the message is one. The real Guru cannot be two, for the real Guru does not speak differently from his predecessors. Some spiritual teachers say, in my opinion, you should do this, but this is not a Guru. Such so-called Gurus are simply rascals. The genuine Guru has only one opinion, and that is the opinion expressed by Krishna, Vyasadeva, Narad, Arjuna, Shri Chaitanya Mahaprabhu, and the Goswamis. 5,000 years ago, Lord Shri Krishna spoke the Bhagavad Gita, and Vyasadeva recorded it. Srila Vyasadeva did not say, this is my opinion. Rather, he wrote, Shri Bhagavan Uvacha, that is, the Supreme Personality of Godhead says. Whatever Vyasadeva wrote was originally spoken by the Supreme Personality of Godhead. Srila Vyasadeva did not give his own opinion. Amazing. You want to start? It's already 8:33. Yes, Prabhuji. Okay. We can start with the discussion. You want to share something? Yes, guys. मेरे लिए क्या? अच्छा, हाँ, तो इसमें एक तो सोल ट्रांसमाइग्रेशन का पॉइंट आया जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक ड्रेस की तरह
सोल चेंज होती रहती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसके रिगार्डिंग कई बार लोग प्रश्न ये भी पूछते हैं कि फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इतनी, पहले इतने लोग नहीं थे, ये नहीं थे, ये जनसंख्या बढ़ रही है ना धरती पे। Yes. तो कई तो लोग एक्चुअली ट्रांसमाइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को कई बार मिस कर देते हैं कि भाई सोल एक्चुअली मान लीजिए कि बहुत सारे मच्छर हैं एक तरह से, वो बहुत सारे आदमी बन जाए तो ऐसा लगेगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि पॉपुलेशन तो सेम ही है, बस ट्रांसमाइग्रेशन की वजह से ऐसा लगता है कि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जीव जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ढूंढता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं इस संसार के सभी लोगों को तारने आया हूँ। तो उनसे कहा गया कि अरे सबको तार देंगे ऐसे तो फिर यहाँ पे बचेगा कौन फिर, अब सबको तार देंगे तो कहे कि इनफाइनाइट सोल्स मटेरियल बॉडी में गिर रही हैं, तो मतलब जितनों को तारूंगा तब तक और मैं इनफाइनाइट सोल वैसे ही गिर जाएंगे तो बट फिर भी जितने उनको मैं तारने आया हूँ, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे। ट्रांसमाइग्रेशन कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अच्छा लगा इसमें जो आया, और फिर सफरिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। प्रभु जी वो अभी गूगल पे देख भी रहा था, पता नहीं ऑथेंटिक है नहीं है, उसमें लिखा हुआ था कि महाभारत में 1600 करोड़ 20,000 लोग मरे थे और अभी अर्थ की पॉपुलेशन देखते हैं इस टाइम पे तो अराउंड 600 to 700 करोड़ है अप्रॉक्स। तो उस टाइम पे देखा जाए तो उसके 3 गुना तो सिर्फ महाभारत में ही मतलब मरे थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तो पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, सब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सब सफर कर रहे हैं। सही है तो एक लेक्चर में भी मैंने सुना था, मोग लीला प्रभु जी बता रहे थे कि राम जी की जो सेना थी उसमें वानर की ही जो जनसंख्या थी वो यहाँ से कई बहुत 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 ज्यादा थी उस टाइम पे। तो भगवान ने तो नेचुरल रिसोर्सेज वो दिए हैं बहुत, कि बहुत ज्यादा जनसंख्या हो तो वो भी मतलब वो भी जी सकते हैं, उनके लिए भी इतने सब रिसोर्सेज दिए हैं। बट वो आज का टाइम ही ऐसा हो गया है कि सबकी नेचर ऐसी हो गई है कि जैसे अवधूत प्रभु आप बोल रहे हैं कि वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो की वजह से हमने ये राइज कर दिया है कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी लेके कि जनसंख्या बहुत है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अभी जैसे करंट सिचुएशन में भी हम देखें तो द सेम पॉइंट कि अभी श्रीलंका में प्रॉब्लम क्यों आई है, आपको पता है श्रीलंका में इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है वो पूरा इसलिए चल रही है क्योंकि वैदिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए हम भूटान में देखते हैं तो वहाँ क्या है कि भुखमरी वगैरह ये सब कुछ नहीं, सब लोग खुश हैं। क्यों? किसी को कुछ प्रॉब्लम है, राजा के पास जाता है, राजा छोटा सा उसे लैंड दे देता है, छोटा सा रहने को स्पेस दे देगा, लैंड में उगाओ खाओ और दे आर हैप्पी। अब श्रीलंका का प्रॉब्लम क्या हुआ है, उनका फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया है, सब एक्सपोर्ट पे उनकी डिपेंडेंसी थी, इंपोर्ट पे, तो कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत खरीद पा रहे हैं उसके प्राइस बहुत हाई हैं, तो कैओस क्रिएट हो गया। क्वेश्चन आता है तो भैया फॉरेन रिजर्व खत्म कैसे हो गया? फॉरेन रिजर्व खत्म इसलिए हुआ क्योंकि उनकी खेती बाड़ी थी ना, ये टूरिज्म पे पूरा फोकस था उनका, टूरिज्म से जो कमाते थे उससे इंपोर्ट करते थे। टूरिज्म खत्म हो गया 2 साल के कोरोना में, तो पूरी कैओस क्रिएट हो गया, और इतना कैओस क्रिएट हो गया कि आदमी की जेब में पैसा है बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है, और मतलब पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है श्रीलंका का इससे पूरा मतलब बर्बाद हो रखा है। तो ये जो हवस रहती है कि और उसमें किसी को खाने को नहीं मिलता है अल्टीमेटली, करेक्ट ना? यस तो सेम पॉइंट जो स्वाति बोल रही थी कि भाई अगर देखा जाए तो कितनी जनसंख्या थी पहले, अगर भगवान राम की सेना में हम देखें कितने सारे थे, और जैसा आपने ही बताया कि कितने लोग तो महाभारत में वैसे ही मर गए थे जो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, उसके अलावा ब्राह्मण वैश्य शूद्र भी अलग अलग होंगे, कितने सारे जनरल सब लोग खुश थे। पर आपके सिस्टम के हिसाब से लोग कहते पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज तो हम ही लोगों ने कंज्यूम कर रखे हैं वरना तो भगवान तो पूरे रिसोर्सेज थे ही रखे हैं पूरे। यस तो जी मतलब अननेसेसरी कंजप्शन बढ़ गई है ड्यू टू सम रीजन, जैसे मीट ईटिंग करते हैं लोग। तो अभी नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री उसमें मैं पढ़ रहा था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबसे बड़ा रीजन ही मीट ईटिंग है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली
जितने रिसोर्सेज एक मतलब एक पशु को तैयार करने में लगते हैं, उसमें कह रहे हैं कि 100 लोग खाना खा सकते हैं, और जो उसका आउटपुट होता है, पशु का आउटपुट होता है, वो इतना होता है कि उसमें सिर्फ 2 या 3 लोग ही खा पाते हैं। तो इतना मतलब ग्लोबल वार्मिंग का भी उस तरह से आ रहा था कि मतलब रिसोर्सेज इक्वली वो मतलब हैम्पर हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं ड्यू टू मतलब that is why this material world is not a gentleman's play। क्योंकि क्या होगा कि गवर्नमेंट इन चीजों को रोकेगी नहीं, इन लोगों की हरकतें बढ़ेंगी, तो फिर क्या होगा कि आपको खाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि खाना तो है ही ना, तो फूड महंगा हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा मेहनत करके पैसे आएंगे तब फूड खरीद पाएंगे। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट रियली अ जेंटलमैन्स प्ले। कलयुग में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम है। इसलिए भैया जितना जल्दी हो सके हम सभी लोगों को थोड़ा निकलना है यहाँ से, है ना। Now our final business is to just go back to Godhead। हो गया बस अपना। और मतलब पहले ये भी लगता था कि मतलब ये बोला जाता है ना, द वर्ल्ड इज नॉट सेफ एनीमोर, द वर्ल्ड इज नॉट सेफ, इट इज वेरी डेंजरस प्लेस। तो अभी हमें मतलब पहले कभी ऐसे यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा क्या भाई डेंजरस है, सही तो रह रहे हैं, अपना घर है, अपना आना जाना, रोड पे आना जाना कर रहे हैं। बट अगर जब शास्त्रों का रेफरेंस लेते हैं तो जब डेंजर समझते हैं डेंजर्स क्या है। तो अभी जस्ट मैं अभी घूम के आ रहा था, तो मैं मतलब यही रोड पे देख रहा था कि लोग इतनी ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई किसी में भी घुसने को तैयार है और एडवेंचर के नाम पे प्रभु जी पैराग्लाइडिंग, लोगों को बड़ा शौक चढ़ता है पैराग्लाइडिंग करने का। अभी एशिया की हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग है यहाँ पे ऊपर धर्मशाला से ऊपर। वहां पे एक आदमी गिर गया प्रभु जी 3 किलोमीटर की हाइट से। हरे कृष्णा। और वो बैलून की तरह फट गया है प्रभु जी, वो बिल्कुल किसी छत पे जाके गिरा है वो। हरे कृष्णा हरे और लोग कहते हैं कि एडवेंचर करना है, फन मिलेगा तो इसमें क्या दिक्कत है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन है। और वो जो पैराग्लाइडिंग थी वो 2 हफ्ते के लिए बंद करी और उसके दोबारा स्टार्ट कर दी वहां पे पैराग्लाइडिंग। और वो हमसे साइन करवा लेते हैं कि हमसे साइन करवा लेते हैं कि हम कुछ लीगल भी नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट पैराग्लाइडिंग करने से पहले। और लोगों को वो मतलब ऐसी हालत है। एडवेंचर के नाम पे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई तो कलयुग की एज कितनी है याद है? शास्त्र में कितना बताया गया? 1,42,000 नहीं, 32 लाख साल है। 40,000 हाँ 32 लाख ईयर्स ऐसे कुछ बताते हैं जी, मतलब 4 लाख के आसपास, 4 लाख 4.5 लाख बोल सकते हैं। अच्छा 4.5 लाख साल। आप सोचे कि 4.5 लाख में से कितना निकल गया? अभी तो कितना निकला, 2000 साल निकले हैं अगर ना इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जाए तो तकरीबन 4.5-5 साल बोल सकते हैं। आप सोचो कि कितनी बुरी हालत है अभी 5,500 साल में, और कितना बचा है अभी। और ऐसा नहीं है कि कल के भगवान कल ही आ रहे हैं, लास्ट में आएंगे जब कलयुग लास्ट चल रहा होगा बिल्कुल, और सतयुग आने वाला है, उस संध्या में आएंगे बिल्कुल। संध्या बोलते हैं, वो युग खत्म हो रहा है बिल्कुल अभी। राधेश्याम पर एक लेक्चर में समझा रहे थे कि अगर हम जैसे भक्ति कर रहे हैं, अगर देवी देवता बन गए तो क्या होगा कि देवी देवताओं का लाइफ स्पेन ज्यादा है। मान लीजिए कि 1 लाख साल, ठीक है, देवी देवता बने, 1 लाख साल खत्म किया और मान लो वापस यहीं पे आ गए फिर से, तो यहाँ तो और भी ज्यादा गंदा हो जाएगा सिचुएशन। आप समझिए ना कि अब से 1 लाख साल के बाद आप वापस आ रहे हैं कलयुग के इस प्लेनेट पे, तो क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे। हो सकता है एक दूसरे को मार काट के खाने का सिस्टम बन गया हो कि जो दिखे मारो और खा लो। बोले लो है, बोले आपकी गलती है ना, आप बाहर ही क्यों निकले। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें मतलब स्ट्रांगली भक्ति करनी है ताकि इसी जन्म में ही निकल जाए यहाँ से, और पीछे मुड़ के ही नहीं देखना है। बोले वॉशरूम में जैसे उठ के बंदा बाहर निकलता है तो पीछे थोड़ा दिखता है अपना काम करो निकलो यहाँ से। That's so dangerous. करेक्ट है ना उदित ब्रो? यस प्रभु जी, एग्जैक्टली। मतलब कुछ है ही नहीं प्रभु जी यहाँ पे, मतलब बर्बाद है, हर चीज बर्बाद है, कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे कुछ भी करने का। बस यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करना है हमें, उन लोगों को भगवान की सेवा करने के लिए। यही विनिंग बिजनेस हो सकता है।
क्योंकि रहना भी तो है ना यहाँ पे, यस प्रभु जी, यस। तो फिर यही है कि जो रहना है तो ठीक है, जो भी काम है भगवान इसे हमें यूज कर। प्रभु जी वो एक विजन देने में भी प्रॉब्लम आती है लोगों को, जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि बैक टू गॉड हेड या फिर लाइफ ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, तो जब एलियन का मैटर आता है तो लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ मे भी पॉसिबल। लेकिन जब आदमी ऐसे सोचता है ना कि, या फिर एलॉन मस्क कहता है ना कि मार्स पे लाइफ आ जाएगी, मार्स पे ले जाऊंगा, तो लोगों को लगता है पॉसिबल है। लेकिन जब शास्त्रों के बेसिस पे हम कहते हैं ना कि हम किसी और प्लेनेट पे जा सकते हैं या फिर हमारा घर कहीं और है, तो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तो हाँ, तो ये साइंस पे बहुत फेथ बढ़ा दिया ना हमारा, हम्म, इसलिए ऐसा है। साइंस पे इतना फेथ बढ़ा दिया है कि हम लोग को साइंस जो कोई बात कहे तो वो सही लगता है, शास्त्र कहता है तो। और हम लोगों का फेथ भी धीरे धीरे भक्ति में आके डेवलप हुआ है, अगर आप देखें तो। यस प्रभु। स्टार्टिंग में तो हम लोग का भी नहीं था। यस यस। ठीक है, तो हमें पाश्चात्य देश तारने वगैरह नहीं बनना है, अपना ही तारना है, और अपने उसी के साथ थोड़ा बहुत प्रचार कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। यस यस। है ना, एटलीस्ट हम तो समझ ही गए। ओके, shall we stop now? Yes, Roji. Anything anyone wants to add? Issue Prabhu, discuss the Shabda Prabhu. Okay. Yes, Roji, we can stop. ओके, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।